एंड दोस्तों, यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए टॉप 50 साइंस एंड टेक के करंट अफेयर्स इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसको पीटी 365 मैगजीन से तैयार किया गया है। और इसका यदि ऑल 500 क्वेश्चंस का पीडीएफ लेना चाहते हो तो आप नीचे लिंक दिया है, वहां से आप ले सकते हो। क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर कि विद रेफरेंस टू द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से रिलेटेड यहाँ पर स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं। आपको बताना है कि विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट गिवन इज करेक्ट। So restriction enzymes है, they are belong to the class of enzyme called nucleases कहा जाता है उसको। They cut the DNA at a specific position पे DNA कट करता है within the DNA। EcoRI is a restriction enzyme that produce blunt end जो प्रोड्यूस करता है। तो तीन स्टेटमेंट्स हैं आपके रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से रिलेटेड, करेक्ट बताना है। फर्स्ट ओनली, फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, एंड फर्स्ट सेकंड थर्ड। सो आंसर होगा यहाँ पे, आंसर यहाँ पे कि फर्स्ट एंड सेकंड। एक्सप्लेनेशन है, ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर अ टाइप ऑफ न्यूक्लियस एंजाइम होता है दैट स्पेसिफिकली कट एट द पर्टिकुलर रिकॉग्निशन सीक्वेंस। दे आर क्रूशियल फॉर क्रिएटिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए। दे कैन प्रोड्यूस स्टिकी एंड्स या ओवरहैंगिंग सीक्वेंसेस और ब्लंट एंड, दैट्स अ स्ट्रेट कट। इको आरआई इज नोन फॉर प्रोड्यूसिंग स्टिकी एंड्स, इसलिए थर्ड स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है एंड फर्स्ट एंड सेकेंड सही है। तो आंसर क्या हो गया, आंसर आपका यहाँ पे बी। रिगार्डिंग द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से पीसीआर से रिलेटेड यहाँ पर है, तो आपको बताना है कि व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट। इट रिक्वायर्स डीएनए लाइगेज टू एम्पलीफाई द डीएनए सेगमेंट। इट इन्वॉल्व्स डीनेचुरेशन, एनिलिंग एंड एक्सटेंशन स्टेप्स। It is used to separate DNA fragments based on size, and it is an in vivo method of a gene amplification. So correct answer यहाँ पे, करेक्ट आंसर आपका बी है। पीसीआर इज in an in vitro or outside a living organism method for amplifying DNA segments. It uses a heat stable DNA polymerase like Taq polymerase, not DNA ligase. ठीक है। The process consists three core steps. First denaturation, second annealing, and third one is extension. Denaturation क्या है? Heating to separate DNA strands, annealing cooling to allow primer to bind, and extension heating slightly to allow polymerase to synthesize new DNA strands. Separating fragments by size is the function of gel electrophoresis. फ्रेंड्स, और सारी मैगजीन्स को PT365 के सारे मैगजीन्स को मिला करके 500 क्वेश्चंस तैयार किए गए, जिसका लिंक नीचे दिया हुआ है। लास्ट समय के लिए काफी यूजफुल पीडीएफ होने वाला है, तो आप चाहो तो ले सकते हो। नेक्स्ट है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज टू सेपरेट डीएनए फ्रेगमेंट्स बेस्ड ऑन देयर साइज एंड चार्ज। ऑप्शंस पीसीआर, जीन गन मेथड, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस और बायोरिएक्टर। सो आंसर है यहाँ पर, आंसर आपका सी, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। एक्सप्लेनेशन है कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज अ टेक्निक यूज्ड टू सेपरेट मॉलिक्यूल्स लाइक डीएनए फ्रेगमेंट्स बेस्ड ऑन देयर साइज एंड इलेक्ट्रिकल चार्ज। डीएनए is negatively charged so that it moves toward the positive electrode. Smaller fragments move faster and further through the gel matrix than larger ones. PCR is a amplification, gene gun is for transformation, and bioreactor for a large scale culture. Next one is, consider the following statement regarding the organ on chip technology से related है यहाँ पे। It is a micro scale system used for mimicking and the human body environment. It is an ethical and cost effective platform for accurate drug testing and personalized medicine. The mechanism involves placing cell on polymer chip to grow into 3D structure. तो correct one is first and second, second third, first third and first second third. So answer यहाँ पे कि तीनों के तीनों statements आपके correct हैं। Explanation, all three statements are correct based on the provided. OOC refers to the micro scale system mimicking the human body environment, offer ethical and cost-effective platform for drug testing and personalized medicine, and involves cell growing into 3D structure on a polymer chip that resemble a real tissue. Next one is, with the reference to a RNA silencing से related है यहाँ पे, it is a gene regulation mechanism that increase gene expression. It involves small RNA molecules like siRNA or miRNA binding to a messenger RNA. Host-induced gene silencing and spray-induced
gene silencing are techniques that used to strengthen plant immunity. So correct one is first and second, third, first, third, and all three. So answer यहाँ पे second and third statement is correct. First incorrect because RNA silencing reduces or completely shut off gene activity, not increase it. Statement 2 and 3 are correct. A small RNA molecule bind to a messenger RNA and HIGS and SIGS are technique for a plant immunity. Next one is consider the following statement about the pangenome. So first statement is it is a collection of genome sequencing from many individuals of the same species. Its key application in agriculture to help new traits for a disease tolerance and resilience in crop. Chinese scientists recently created a first pangenome of Asian rice powered by a high fidelity sequencing technology. Correct one is first and second only, second, third, first, third, or all three. So correct answer यहाँ पे all three statements are correct here. Pangenome is a pangenome is a collection of genome from many individuals of a same species. It aids in agriculture for introducing new traits. Chinese scientists used hi-fi technology for the Asian rice pangenome. Next one is with the reference to the super genes. It is a controls of a group of genes called FOX which manage proteins for developing healthy pollen. Its first evolution helps explain Darwin abdominal mystery regarding the rise of flowering plants. It was discovered by the researchers from CSIR Center for Cellular and Molecular Biology, Hyderabad. Correct one is first and second and third, first, third, or all three. So correct answer is all three statements are correct here. Next one is consider the following statement regarding the DNA profiling से related है यहाँ पे. It is a technique used to identify individuals by analyzing unique pattern in their DNA. The technique is based on the variability of a coding regions of DNA called VNTR, variable number of tandem repeats. Mitochondrial DNA or is used for a nuclear DNA is degraded. So correct one is first, second, third, first, third, or all three. So correct answer है यहाँ पे कि first and थर्ड स्टेटमेंट आपके सही है. सेकंड इनकरेक्ट है क्योंकि डीएनए प्रोफाइलिंग इज बेस्ड ऑन द वेरिएबिलिटी बिटवीन द इंडिविजुअल्स ऑफ अ नॉन कोडिंग रीजन ऑफ अ डीएनए कॉल्ड वीएनटीआरएस. ठीक है. नेक्स्ट with reference to the mitochondrial replacement therapy MRT से रिलेटेड है यहाँ पे. Mitochondrial diseases are exclusively inherited from the child father. MRT is a form of reproductive in vitro fertilization that replaces abnormal nuclear DNA with a donor healthy DNA. A child born through MRT has three distinct genetic materials. Correct one is first, second, three only, second and third on तीनों. So correct one answer है यहाँ पे B. First statement is incorrect because mitochondrial diseases are exclusively inherited from the child mother. Second statement is incorrect. MRT replaces the women abnormal mitochondrial DNA with a donor healthy mitochondrial DNA, not the nuclear DNA. So third statement is correct. The embryo contains nuclear DNA from a man and a woman, the prospective mother, and mitochondria from a different woman, the mitochondrial donor, resulting in three genetic materials. Next one is consider the following statement regarding the techniques. Regarding the techniques used in the mitochondrial replacement therapy (MRT), pronuclear transfer (PNT) is performed before fertilization, and maternal spinal transfer is performed after fertilization. Correct one? First only, second only, दोनों या इनमें से कोई भी नहीं. So the answer is here D. Statement 1 is incorrect. PNT is done after the fertilization, and second one is incorrect because MST is done before fertilization. So both statements are incorrect. Next one is consider the following statement regarding the induced pluripotent stem cells related to IPSC. IPSC are found naturally in the inner cell mass of a early embryo. They are created through a introduction of embryonic genes into a somatic cells, causing it revert to a stem cell-like state. Correct one is first only, second only, both, yeah, neither. So answer है यहाँ पे B is correct. A is incorrect because embryonic stem cells found in the inner cell mass of the early embryo. And second one is correct. IPSC are artificially created in a lab setting using the methods. This one.
Next one, with the reference to the Phenome India National Biobank, consider the following statement. It was recently inaugurated at the CSIR Institute of Genomics and Integrative Biology. Its purpose is to aid in early diagnosis and improve therapeutic targeting. It is based on the UK biobank model customized for Indian diversity. Correct one is the first and second, third, first, third, and all three. So correct answer, all three statements are correct here. Next one is with reference to the Bharat Gen. With reference to the Bharat Gen, India's first indigenous developed AI-based multimodal large language model (LLM). Consider the following: it is a public-private partnership initiative launched by the Ministry of Electronics and Information Technology. That's a meeting. A primary goal is the creation of Bharat-centric fundamental LLM model that covering 22 scheduled Indian languages. So it is being implemented through a technology innovation hub TIS like a Foundation for Innovation and Internet of Things at IIT Bombay. So correct one is the first, second, third, first, third, or all three. So correct one answer is here 2 and 3. First incorrect because the Bharajan is a public-private initiative, but it was launched by the Ministry of Science and Technology, not MIT. Okay. Next, with which of the following are mentioned as the key application of the quantum technology in the simulation in healthcare and well-being, quantum key distribution and post-quantum cryptography, sensing and meteorology that include navigation and gravitation and development of vaccines and drug chemistry. So using the correct one is first, second, third, first, third, fourth, second, third, fourth, and all four. So answer यहाँ पे कि all four statements are correct. Consider the following statement regarding the blind sight technology mentioned in the it is a brain computer interface implant that aims to restore vision by the bypassing the retina and directly simulating the visual cortex. The implant consists of a micro electrode array embedded in the visual cortex. Neuralink aims to implant this chip in a human by 2025. Correct one is humanly. First only, first and second, third, or you know. So all three statements are correct here. Answer D. With respect to the Bluetooth mesh networking, it is a many-to-many communication network. It requires central hub or router to manage network traffic. Users need to register their devices with a central authority to join the network. So correct one is first only, first and second, third, और तीनों. आंसर है यहाँ पे आपका फर्स्ट सही है. One is a many-to-many communication network. Second is correct, potential benefits, no central hub required, and third is incorrect because no registration required. Next, consider the following statement regarding the project Waterworth. So, first statement: India is the longest submarine cable project, and it will be connect 5 major cities in the country. Undersea cables in this project are fiber optic cable that laid across the ocean for that transmit information and enable high-speed internet. Correct one is the first, second, third, first, third, या तीनों. So all three statements are correct here. तीनों को तीनों यहाँ पे सही है. आंसर डी. With reference to the NISAR related यहाँ पे NASA ISRO synthetic aperture radar satellite mission. It is the world first Earth observation satellite to integrate both L-band and S-band synthetic aperture radar on a single platform. Second one is the NASA provided the S-band radar and ISRO contributed the L-band radar and the spacecraft bus. The satellite features a large 12-meter diameter common foldable reflector antenna. Correct one is one only, फर्स्ट एंड थर्ड और तीनों. सो आंसर है यहाँ पे कि फर्स्ट एंड थर्ड आपके सही है. सेकेंड रॉन्ग है क्योंकि नासा प्रोवाइडेड द एल बैंड रडार एंड इसरो दैट्स कंट्रीब्यूटेड द एस बैंड रडार. ठीक है. नेक्स्ट वन है तो विद रेफरेंस टू द आदित्य 11 मिशन से रिलेटेड है यहाँ पे नॉट करेक्ट पूछा है. इट इज इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड सोलर मिशन एंड सेकंड बी इज इट इज प्लेस्ड इन द हेलो ऑर्बिट अराउंड द Lagrange point of the Sun-Earth system, approximately 12 million kilometers from the Earth. The mission life span is expected to be 10 years, and data from the mission VELC payload has been used to estimate the parameter of coronal mass ejection. So not correct क्या है? Not correct is C here. ठीक है, क्योंकि इनकरेक्ट है क्योंकि लाइफ स्पैन इसका 5 years का है.
With reference to the SpaceX mission से related है यहाँ पे. The mission involves the development of technology required for rendezvous, docking, and undocking of two small spacecraft. ISRO achieved the second successfully satellite docking under this mission. The mission successfully will be make India the fourth country to have a launched a crewed uh, spacecraft after US, Russia, and China. Correct one है. ये फर्स्ट ओनली फर्स्ट एंड सेकंड सेकंड थर्ड और तीनों. सो आंसर यहाँ पे कि फर्स्ट एंड सेकंड आपका सही है. थर्ड रॉन्ग है क्योंकि दिस स्टेटमेंट इज फॉर अ गगनयान मिशन नॉट फॉर अ SpaceX. नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नाविक से रिलेटेड है यहाँ पे. The system provides positioning, navigation, and time services over India and a region extended up to 1500 kilometers around the Indian mainland. It uses the 5L5 frequency band for a navigation signal. The system relies on a constellation of 7 satellites in a geostationary orbit (GEO) and geosynchronous orbit (GSO). So correct one is the first only, first and third, second and third, all three. So answer यहाँ पे B. Answer B. First Navi covers India 1500 kilometers around it. Second statement incorrect. Both it uses both L and S frequency bands. And third correct है. Constellation covers 7 satellites in GEO and GSO. Consider the following statement about the brown dwarfs related है यहाँ पर. Brown dwarfs are celestial bodies that are more massive than stars but less massive than planets. They are often known as failed stars. They do not diffuse hydrogen in their core like a main sequence star. So correct बताना है फर्स्ट सेकंड सेकंड थर्ड फर्स्ट थर्ड या तीन. सो आंसर है यहाँ पे कि सेकंड एंड थर्ड आपका सही है. एक्सप्लेनेशन फर्स्ट इनकरेक्ट. ब्राउन dwarf are more massive than large planet but less massive than stars. ठीक है. सेकंड करेक्ट है क्योंकि नॉन एज अ फेल्ड स्टार एंड थर्ड करेक्ट. दे नॉट डू नॉट यूज हाइड्रोजन इन देयर कोर लाइक अ मेन सीक्वेंस सिस्टम. नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एंटीमाइक्रोबियल रेसिस्टेंस. ठीक है. The AMR is a natural process that occurs through a genetic changes in pathogen over time. The emergence and spread of AMR are solely the result of the natural processing, not human activity. Strains of bacteria, virus, parasites, and fungi resistant to most antimicrobial that are termed as superbugs. So correct one is first, third, second, third या तीनों. So आंसर यहाँ पे कि फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट सही है. सेकंड रॉन्ग है क्योंकि the emergence and spreads are related due to several anthropogenic or human factors. Next, with reference to the indigenous developed malaria vaccine at falci vaccinated, it is a dual stage targeting vaccine for Plasmodium falciparum. It's a target for a pre-erythrocyte liver stage for the parasitic life cycle. It is a recombinant chimeric vaccine combining antigen from a different stages. Correct one is the first only. फर्स्ट थर्ड सेकंड थर्ड या तीनों. सो आंसर यहाँ पे कि फर्स्ट एंड थर्ड आपका करेक्ट है. तो सेकंड रॉन्ग है. इट इज टारगेट टू क्रिटिकल स्टेजेस है प्री एथ्रोसाइटिक और लिवर एंड ट्रांसमिटर सेक्सुअल स्टेजेस. नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू द वेट लॉस ड्रग. वेट लॉस जो ड्रग है वीगोवी या सेमाग्लूटाइड. Consider the following statement. It is administered orally in the tablet form. Its function as appetite suppressant by mediating the hormone glucagon-like peptides GLP-1, and the hormone GLP-1 is typically released after eating and induced a feeling of fullness. So correct one is the first, second, third only या तीनों. So answer यहाँ पे कि second and third आपका सही है. First wrong. The drug will be available in the form of injection, not in the form of tablets. ठीक है. सेकेंड एंड थर्ड आपका सही है. नेक्स्ट, रिगार्डिंग द आकाशतीर प्रोजेक्ट से रिलेटेड है यहाँ पे. इट इज इंडिया फुली इंडिजिनस ऑटोमेटेड एयर डिफेंस कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग सिस्टम. इट इज अ पार्ट ऑफ द C4I command control communication computer and intelligence framework. The system is a vehicle based, making it mobile. So correct only first, second, third, first, third या तीनों. सो आंसर है यहाँ पे कि तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स आपके सही हैं. Next, with reference to the Prelay missile related है यहाँ पे. It is a surface to air missile developed by the DRDO long range air to ground precision attack missile. It is a surface to surface short range solid propellant quasi ballistic missile. It is a beyond visual range air to air missile set missile.
सो करेक्ट वन है यहाँ पे कि सी आपका करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द आईएनएस Amala ship. It is named after historic port of Maharashtra, India's first anti-submarine warfare silo watercraft, and it is the largest Indian naval warship to be propelled by a diesel engine. What is the combination? So correct one is the A only two and the first only two and three, first second three and none of the above. So answer यहाँ पे C, all of the above are correct. With reference to the रुद्रास्त्र आप बताना है, it is a hybrid unmanned aerial vehicle UAV with a vertical takeoff and landing VTOL capability. It is equipped with a precision guided anti-personnel warhead and it is successfully tested at a Pokhran, Rajasthan. करेक्ट बताना है, फर्स्ट सेकंड सेकंड थर्ड फर्स्ट थर्ड या तीनों सही है, तो आंसर है यहाँ पे कि तीनों के तीनों स्टेटमेंट आपके सही है। Next, consider the following statement regarding thorium molten salt reactors related to TMSR. TMSR are considered safer than the conventional light water reactor because their fuel is already in the liquid state. Second, the primary fuel cycle used in the TMSR is in the plutonium-uranium cycle, and India has a significant reserve of thorium actively pursued its usage in the TMSR technology. So, correct one is the first only, third, second, third या तीनों। सो आंसर है यहाँ पे कि फर्स्ट एंड थर्ड आपका सही है। सेकंड गलत है क्योंकि TMSR आर डिजाइन टू यूटिलाइज द थोरियम यूरेनियम 2233 fuel cycle which is a basis of the India third nuclear stage। ठीक है, नेक्स्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वेनेडियम रिडॉक्स फ्लो बैटरी से रिलेटेड है आपका। VRFB are store energy in the liquid electrolyte solution contained in external tank. Their energy capacity is independent of the power output. They are more suitable for a large scale grid level energy storage application than lithium ion batteries। सो करेक्ट बताना है कि फर्स्ट ओनली सेकंड ओनली दोनों या इनमें या तीनों आंसर है। सो आंसर है यहाँ पे कि तीनों के तीनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। नेक्स्ट विद रेफरेंस टू द इंडियाज डीप ओशन मिशन से रिलेटेड है यहाँ पे। द मिशन इज a ministerial multidisciplinary program. Second, the primary objective is to explore the deep ocean for resources and develop the technology for sustainable use, and the mission is set for by completed by 2025। Correct one is फर्स्ट सेकंड सेकंड थर्ड फर्स्ट थर्ड या तीनों सही है। सो आंसर है यहाँ पे कि फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट आपका सही है। थर्ड के रॉन्ग है क्योंकि मिशन इज लाइकली टू बी कंप्लीटेड बाय 2026। Next, consider the following statement regarding the SOGAR system. जो कि SOGAR system has been inaugurated at the India Meteorological Department in Delhi में, and the system is related to the monitoring of seismic activity and tsunamis। करेक्ट क्या है? तो फर्स्ट वाली सेकेंड वाली दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है आपका यहाँ पे कि फर्स्ट आपका सही है। सेकेंड ठीक है, सेकेंड आपका इनकरेक्ट है। नेक्स्ट विद रेफरेंस टू द अल्टर मैग्नेट के बारे में, अल्टरनेट के बारे में। So alternating are a new type of magnetic material that combines the best features of ferromagnets and antiferromagnets. They possess a net magnetic moment that can be manipulated by external magnetic field. They exhibit an alternating spin structure with net zero net magnetization। So correct one is first second first third second third या तीनों। सो आंसर यहाँ पे कि फर्स्ट है थर्ड आपका सही है। सेकंड गलत है, क्यों? क्योंकि दे हैव जीरो नेट मैग्नेटाइजेशन। नेक्स्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द शिनकानसेन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। शिनकानसेन इज हाई स्पीड रेल सिस्टम डेवलप्ड बाय इंडिया। की फीचर्स इंक्लूड हाई स्पीड, हाई वॉल्यूम एंड हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसपोर्ट। द सिस्टम यूजेज अ डेडिकेटेड ट्रैक टू प्रिवेंट इंटरसेक्शन विद द रोड ट्रैफिक और रेल सिस्टम। सो करेक्ट बताना है कि फर्स्ट सेकंड सेकंड थर्ड थर्ड ओनली या तीन। सो आंसर है यहाँ पे कि सेकंड और थर्ड आपका सही है, फर्स्ट इनकरेक्ट है। ठीक है, शिनकानसेन टेक्नोलॉजी context of Indian age, it is a Japanese technology, basically the Japanese technology, and it is acquiring or using it for a मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फूड irradiation। Food irradiation is a process that exposes food to ionized radiation to improve food
Safety and shelf life. The process makes the food radioactive and harmful for consumption. Radiation helps in controlling pest, delaying sprouting and reducing the need for a chemical fumigants. So करेक्ट बताना है कि फर्स्ट सेकंड सेकंड थर्ड फर्स्ट थर्ड या तीनों. सो करेक्ट आंसर है यहाँ पे आपका कि फर्स्ट और थर्ड आपका सही है. सी. सेकेंड स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि रेडिएशन डज नॉट मेक द फूड रेडियोएक्टिव बनाता है. सो फ्रेंड्स, एक कुछ बेहतरीन क्वेश्चन है जो आपके यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए काफ़ी यूजफुल होने वाले हैं. ऑल 500 क्वेश्चंस का पीडीएफ का लिंक नीचे दिया हुआ है जिसको PT365 मैगजीन से तैयार किया गया है. लास्ट समय में काफ़ी यूजफुल होने वाले हैं, तो आप इसको चाहो तो ले सकते हैं.